Hello everyone. So today we are going to see the complete logarithm. So first of all I will tell you the sequence in which I will teach you about the complete logarithm. So first of all I will let you know about the basic concept. Already I have covered this in previous video, but then also in this video I will brief you. Secondly I will cover about the type of log, how many type of log are there, that is type of log. After that I will teach you about the conditions that are necessary in log. After conditions I will tell you some important, I will let you know about some important basic values that every student should remember. After that the most important part come, that are known as the properties. I will let you know about different type of property that are used in the log, and also tell you about some confusions that students have. Then after that after that we will solve some practice questions. Some practice questions we will see. So one by one we will cover each topic. So let me number 1 2 3 4 5 6, and once this will complete, whole logarithm we will get. So now first of all we will see the basic concept. So let's write an equation, that is log of n base a is equal to x. As in my previous video I have explained this equation, and it tells that a को अपन कितने पावर तक ले जाएं कि अपन को n मिल जाए. तो बेसिकली दिस कैन ऑल्सो बी written in the form of exponent, or basically it represent exponent also. So this can also be written as, that is a की power x is equal to n, and this simply means that a को अपन यदि x की power तक ले जाते हैं then we will get the number n. So this is the basic concept. After that we will see second, that is type of log. So basically there are two type of log. First is common log. So common log और those कॉमन लॉग वो होते हैं जो कि बेस 10 पर चलते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग लॉग ऑफ n बेस 10, सो जब भी आपको बेस 10 दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है, कॉमन लॉग है. पर इसी को ही अपन ऐसा भी लिख देखते हैं, लॉग ऑफ n बेस नहीं भी लगाए, इसका मतलब भी क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 में है. तो यदि आपको लॉग दिखता है ऐसा लॉग ऑफ n, तो डेट मीन्स इट इज़ कॉमन लॉग. एंड सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग मीन्स जो लॉग रहेगा वो बेस ई पर रहेगा, तो इसको बेसिकली बताया जाता है ln e. जहाँ भी आपको ln n दिख जाए डेट मीन्स कि उसका बेस क्या होगा, e होगा, या इसको अपन ln e भी लिख सकते हैं. सो ये दो प्रकार के लॉग होते हैं. सो अपॉन कंटिन्यूशन नाउ वी विल सी व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द लॉग. सो लेट मी राइट द बेसिक इक्वेशन ऑफ लॉग, दैट इज log of n base a is equal to x. Now the necessary condition for this log to be valid are, first is that the value of n should be greater than 0. अब n की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता. तो अपन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया log of -5, क्या मैं निकाल सकता हूँ, बेस तो अपन को पता है यहाँ क्या होगा, 10 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका यदि अपन मीनिंग समझे कि 10 को AC पावर पर ले जाओ कि आंसर -5 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 10 को अपन AC पावर पर रेस करने की इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए. फॉर एग्जांपल जैसे मैं 10 को 1 की पावर पर रेस करता हूँ तो भी पॉजिटिव आएगा, 10 को अगर 2 की पावर पर रेस करूँगा तो भी पॉजिटिव आएगा, 10 को यदि -1 की पावर पर भी रेस कर दिया तो भी 1/10 आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव. तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकाला जाता है. तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, n शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ जो सेकंड कंडीशन आती है वो क्या होती है, जो बेस a है वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो बेस क्यों अब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसका अपन एग्जांपल समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल यदि मेरे को ऐसा दिया हो log of 8 वो बेस नेगेटिव दिया हो, तो ये वैलिड नहीं होता. अब ये वैलिड क्यों नहीं होता, क्योंकि अपन नेगेटिव बेस पर यदि कोई पावर लेते हैं तो वो कभी पॉजिटिव आती है या फिर कभी नेगेटिव आती है, तो वो फ्लक्चुएशन के कारण पैटर्न स्टेबल नहीं होता. जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब -2 को AC पावर पर रेस करो कि अपन को 8 मिल जाए. तो -2 को फॉर एग्जांपल मैंने 2 पर रेस किया तो मेरे को 4 मिल रहा है. अब -2 को मैंने 3 पर रेस किया तो -8 मिल रहा है. तो यहाँ पर तुम देखो फ्लक्चुएशन देखो, पहले अपन को 4 मिल रहा है फिर -8 मिल रहा है. तो इस कारण क्या होता है कि कंसिस्टेंसी इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉग फेल हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए क्या है, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. नाउ थर्ड जो आता है, थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती. ऐसा क्यों, यदि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यदि अपन निकालते हैं log of 5 बेस 1, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि 1 को
1 को आप रेज़ करो ताकि अपन को 5 मिल जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 50 लेता हूँ तो भी 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई जेड, हमेशा 1 ही आएगा। इसका मतलब कभी अपन को ये वैल्यू नहीं मिल पाएगी 5, या कुछ भी एक्स वाई जेड वैल्यू हुई वो अपन को नहीं मिल पाएगी, इसलिए कभी भी ए की वैल्यू 1 नहीं होती। सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द log to exit, that is first n should be greater than 0, base should be greater than 0 and base should not be equal to 1. So these are the 3 important conditions. Now I will let you know about some important value that every student should remember. So let me write, that is important basic values. So these value you should always remember, that is log of 1, I am taking the base a, so the value of log 1 is always 0. Then log of a base a is equal to 1, and log of 1 by a base a is equal to minus 1. You should remember these 3 results, these are very important. Now fifth, now the most important part comes, that is the properties of log. So this is a very important part of the video, you should completely focus on this. So one by one we will see the properties. So first comes, that is multiplication rule. Now what does this multiplication rule says? यदि log of x into y base a, यदि ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी दो वेरिएबल से मल्टीप्लाई में दिए हैं और बेस कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं बेस a लेके चल रहा हूँ, तो आप इसको log of x बेस a प्लस log of y बेस a में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मल्टीप्लाई जो था वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पहली प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ सेकंड कम्स, दैट इज डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल है log of a x y y, तो डेट इज इक्वल टू द log of x बेस a माइनस log of y बेस a, दैट इज divide is converted into subtract. So these are the trick that you should remember. Here the multiply is converted into the addition, here the division is converted into the subtraction. Now comes the third rule. In third rule we will see the power, that is known as the power rule. So in power rule I am writing that log of x की power p base a, so this will be equal to the power p, this come in front, ये आ गया जाती पावर, that is p log of ये x base a। तो पावर जो है हेयर, द पावर किस में कन्वर्ट हो गई, पावर जो है बाहर मल्टीप्लाई हो गई, तो मल्टीप्लाई आउटसाइड। So this is the third property. Now I will explain you the fourth property. Now let's see the fourth property. Now fourth property is, that is change of base formula. So how this is done? Formula, like for example, that is log of x a, so that can be written as log of, suppose I have to change this log of x base a into the base b, so this can be written as log of x base b divided by log of a base b. So in this way it is done. Now there are some common confusions or mistakes that generally the students make, so I am letting you know what they do. So basically they do, that is log of a plus b, so they do log of a plus b is equal to log a plus log b. So this is completely wrong. So this is not the property of log, you should not get confused, as I already tell you the trick, that the multiplication is converted into the addition and division is converted into the subtraction. So never make this type of mistakes. So this is very important, you should remember that this is not possible, so always remember that. Now next I will tell you about more properties. Fifth property come, sometime it is given that log of x base a is greater than log of y base a. If such type of term is given, then there are two conditions. If a is greater than 1, that is यदि base 1 से बड़ा है, then you can directly write x is less than y. और यदि if जो base है वो 0 से 1 के बीच में है, in that condition the sign are reversed, that is x will be greater than y. So this is also the important property you should remember. Now come the sixth property. In sixth property, log of x base a is equal to log of y base a. This equation is given.
So from this equation you can write x is equal to y only if this can be written if x and y are greater than 0. Also a should be greater than 0 and a should not equal to 1. These are the three conditions that I have already told you in necessary condition section. So if this condition satisfy, then you can write x is equal to y. And then the last property come. This is very important property. You should mark this as a star. That is, if the logarithm is given in exponent form, that is e की power ln a की power x. So here you can see that exponent and the base as there is ln, so base will be e. So this can be written as a की power x. So this is important property you should remember. Now we will see some basic questions to understand these properties. So let me take first question 1. It is given that log of 2, that is 32. What will be the answer? So how you can solve this? So you can see that solution, log of 2, 32 can be written as 2 की power 5. Now using this exponent property, now using the property which I have told you in the previous page, that is in this page I have told you that this power rule, that the power p come in front and it is multiplied with the log. Using this property, that is power rule, so when you will use the power rule, so this 5 will come in front and this will be log 2 base 2, and as you know log 2 base 2 is equal to 1, so this term will be equal to the 1. So answer will be 5 into 1, that is equal to the 5. Hope you understand it. Now let's come to the second question. Second question is let me solve here only. That is log of 1000 base 10. So in the similar way this will also be solved. So you can write this equation as log of 10 cube base 10. So again using power law, this 3 will come in front, so this will be log 10 base 10 and this log 10 base 10 will be 1. So the answer will be 3 into 1, that will be equal to 3. Let's take one more question. That is question number 3, and this question will be like log of 1 by 3 base 3. So when we solve this question, so you can write this equation as log of, so this will kitna hoga, log of, this can be also be written as log of 3 की power minus 1 and base 3. Again using the power law, minus 1 will be sent to here and log 3 base 3 will be 1. So answer will be minus 1. So these are the basic properties, concept, what are the necessary condition of the logarithm. If you like the video and if you want more advanced question, then you can tell me in comment section, so I can also discuss some advanced question in which all these property will be used. So thank you guys, this is all about the logarithm.